just 4 villages and 25 women SHG members in each of these 4 villages. So total beneficiaries are 100. Now we have created awareness among the farmers that this is a climate resilient crop. It doesn't require much water. In fact, the growing duration of cultivation of this crop is much lesser than a normal food grain. We want to encourage them to produce it in a higher quantity so that it can be marketed in the urban market areas, flavor and taste, and that can be the USP of this particular millet variety. So that is what we are trying to promote. Eventually, probably we'll have the whole of Phek district becoming the millet, bowl of Nagaland. That is the future that I see. This seed bank was constructed under the NABARD-sponsored project implemented by Krishi Vigyan Phek. This seed bank was created to conserve the local indigenous seeds of foxtail millet and also of different crops. We, the Zelome village people, are really grateful to the department for initiating and taking part to build up, to cultivate the millet cultivation in our village. Due to NABARD and KVK, now in our village, almost 40 to 50 houses we are cultivating millet. एरोमेटिक फ्रेग्रेंट वैरायटी ऑफ राइस है। इसमें सबसे यूनिक चीज़ ये है कि ये दुनिया के किसी भी कोने में और कहीं नहीं पाई जाती है। ये सिर्फ सागम और इसके जो आसपास के पड़ोस के गांव हैं, बस सिर्फ वहाँ पर ये पाई जाती है। और सबसे बड़ी चीज़ जो इस मुश्कबुज्जी चावल की है कि इसमें एक खुशबू और एक महक रहती है, और इसका जो स्वाद या टेस्ट जो इसका है वो एक अलग यूनिक सा टेस्ट रहता है इसका। इस मुश्कबुज्जी को एक FPO की शेप में लाने के लिए जो है नाबार्ड ने 2017 से एफर्ट्स किए। 30 से 40 मेंबर्स पे हमने ये स्टार्ट की थी, लेकिन आज की डेट में हमारे 500 के करीब मेंबर्स है, और उसमें से भी हमारे 400 से ज़्यादा हमारे जो है शेयर होल्डिंग मेंबर्स हैं जिन्होंने अपना शेयर परचेज़ किया हुआ है। FPO की कुछ बहुत ही बड़ी मेजर उपलब्धियाँ अचीवमेंट्स रही है, जैसे कि इस FPO को ये पहली FPO इस जम्मू एंड कश्मीर UT की रही है जिसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस मिला है। तो इससे पहले किसी भी फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या FPO को कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस आज तक नहीं मिला है। फार्मर ही कहे कि मेरी इनकम में इंक्रीमेंटल इनकम आई है मेरी FPO से जुड़ने के बाद, तो ये एक हमारे लिए एक यार्डस्टिक है कि ये प्रोजेक्ट सक्सेस। ये कॉन्सेप्ट था नहीं क्लियर लोगों को, तो उसको हमने कैसे ओवरकम किया। हमने बहुत ज़्यादा सेंसिटाइजेशन की लोगों की, हमने 10-10, 20-20 लोगों के ग्रुप को इंडिविजुअली सेंसिटाइज करने की कोशिश की। हमने उनको समझाया कि आप देखिए FPO में आके आपको कितना फ़ायदा हो सकता है, और आप माने न माने FPO ही आपका फ्यूचर होगा। 5 साल के लिए हमने एक बिजनेस डेवलपमेंट प्लान बनाया कि कैसे कंपनी सस्टेन हो जाएगी, कैसे प्रॉफिट कमाएगी, कैसे आम फार्मर को प्रॉफिट होगा। तो इसमें हमने शेयर होल्डर्स लिए। आज की डेट में हमारे साथ 523 लोग जुड़े हुए हैं। इस साल इसका GI टैगिंग भी आ गया। GI टैगिंग आने से इसके एक पहचान बन गई, और इसकी ही नहीं कश्मीर की पहचान बन गई, और कश्मीर में सागाम की पहचान बन गई। दुनिया में अगर आपको आज मालूम करेंगे कि सागाम में मुश्कबुज्जी हो रहा है, तो उससे इसका रेट भी इंक्रीज़ हो गया। और डिमांड कि हमने अपने दौर में कुछ ऐसा काम किया जिससे लोगों के रोज़गार और आमदनी के मौके बढ़ गए। FPO ने जो मेहनत की है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मेहनत की है मार्केटिंग में, इंशाल्लाह हमने नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट टच किया है सर। इसके साथ साथ हम शुक्रगुजारी करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसके साथ साथ नाबार्ड की, उसके साथ साथ स्कॉस्टी की, उसके साथ साथ जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है हमारी ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन, खासकर शिबिर साहब, उसने हमारी शान ब शान हमसे चले। हमारी शान ब शान उसने हर किसी चीज़ में, जब क्रूशल मोड़ भी है, उसने हमारे साथ दिया है। ആദിവാസി സമൂഹങ്ങളുടെ അവരുടെ തനത് കൃഷിയെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടും അതിനെ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നൽകണമോ, പരിശീലനമായാലും സാമ്പത്തിക മേഖലയിലായാലും ബാങ്ക് ക്രെഡിറ്റ് ആയാലും മറ്റ്
പദ്ധതികളുടെ സർക്കാരേതര സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും പഞ്ചായത്ത് രാജ് സംവിധാനങ്ങളുടെയും പദ്ധതി കൺവേർജൻസ് വഴി, നബാർഡിൻ്റെ പദ്ധതിയോടൊപ്പം തന്നെ പദ്ധതി കൺവേർജൻസ് കൂടെ വഴി സമഗ്രമായ പദ്ധതി അവരുടെ ജീവിത നിലവാരം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് നിർവഹണം ചെയ്യുക എന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ് നമ്മളിവിടെ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്തത്. ഇത് 2016 തൊട്ട് 2022 വരെ ആദ്യത്തെ ഘട്ടവും 596 കുടുംബങ്ങളെ ചേർത്തുകൊണ്ട്, രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം 2018 ആരംഭിച്ച് 2025 അവസാനിക്കുന്ന രീതിയിൽ 500 കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ചെയ്തു വരുന്നത്. ഇനി വരുമാന മാർഗമൊന്നും ഇല്ല, അങ്ങനെ ജീവിക്കും. ഒരു ഡ്രസ്സ് വേണം, ഒരു ഡ്രസ്സില്ല, കുഞ്ഞിനെ പഠിപ്പിക്കാൻ വകയില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ ഇരുന്ന സമയം നിറയെ വെള്ളം, ഇവിടം വരെ വെള്ളമാണ്. അപ്പൊ അവിടെ എത്തി രാത്രിയിൽ 12 മണിക്ക് ഞാൻ വന്നു. ഒത്തിരി കാലഘട്ടമല്ല, ഒരു 4-5 വർഷം മുന്നേ അങ്ങനെ ഞാൻ മരിക്കാൻ വന്നു നിന്ന സ്ഥലമാണിത്. ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളോട് പൊരുതി നേടിയെടുത്തതാണ്. എനിക്ക് നേടിയെടുക്കണമെന്ന് തോന്നി. അങ്ങനെ ഞാൻ തയ്ച്ചു. 1 ലക്ഷം രൂപ എടുത്തോളം ഞാൻ എന്താ പറയുക, മാസത്തിൻ്റെ ആ സമയം തന്നെ എനിക്ക് സമ്പാദ്യം ഉണ്ടായി. അങ്ങനെ എൻ്റെ മോളാണേലും അവള് ഞങ്ങൾക്ക് കിടക്കയോ അങ്ങനെ കട്ടിലോ ഒന്നും ഞങ്ങൾക്കില്ല. ഞങ്ങൾ പായാലോ കിടക്കൊണ്ടിരുന്നു. കിടക്കാൻ മേടിച്ചു, കുക്കർ മേടിച്ചു, ഗ്യാസ് മേടിച്ചു, പിന്നെ കട്ടിൽ മേടിച്ചു, പിന്നെ മിക്സി മേടിച്ചു. അങ്ങനെ വീട്ടിൽ ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള കുറേ, ഇപ്പം എന്ത് ആണെങ്കിലും നല്ലൊരു ചങ്കുറപ്പും ധൈര്യവും ഉണ്ട്. എന്തും നേരിടും, എന്ത് പ്രശ്നം വന്നാലും എന്ത് വിഷയം വന്നാലും ഞങ്ങൾ ഈ നബാർഡിൽ തന്നെ നിന്ന്. The genesis for Nabard's Tribal Development Program, that's the Adivasi Development Program, jiska coincidentally inception happened in Gujarat itself in 1985. Then uska pilot fir Maharashtra mein hua in 2000, and based on the successes and the learnings from there, Nabard evolved its own strategy of tribal development programs, jo hota hai Tribal Development Fund ke andar. This was instituted back in 2003-04 with a corpus of 50 crores initially. Now it's grown significantly. Agar cumulative baat kare financial commitment ki under the TDF program all over India, that stands at over 2,700 crores and supported over 950 projects all over India. Basically, tribal belts mein jo staples ki cultivation hoti hai, wahan se what we do is we set aside 1 acre of land, and that's land that's been set aside. It's set aside for, say, purposes like horticulture or even floriculture in certain cases. Now, this patch of land which has been set aside for horticulture, that is supplemented with a package of practices. जैसे मैडम ने बताया, स्टेकिंग करते हैं, वीडिंग करते हैं, इसके अलावा वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए टैंक्स भी देते हैं. इस प्रोजेक्ट में टैंक्स दिए गए हैं. So supplemented with these practices, the idea is to generate optimal production. 2 फायदे हैं. It's not just augmenting the income of the farmers, the tribal community, but at the same time there's also an important fallback option.